Hi everyone, I'm Samreen Mahmood and I'm the creative director of Senses by Samreen, which is a home interior design firm. I help women renovate and redecorate their houses. So today we are talking about 10 simple Ramzan decoration ideas. So as we all know, COVID is here and we are not uh, having those kind of iftaris like we used to have before. So इस दफ़ा why not just decorate our whole homes with little DIYs और हम थोड़ा सा बच्चों को engage कर सकते हैं. So there's Ramzan calendars as well, and there are LED lights and lanterns and so many things we can do with our homes. So whether it's your dining table, your corner of your house या आपके maybe curtains, and there are so many areas जिनके लिए we probably need someone to have talk about it, और थोड़ी इंस्पिरेशंस हो, कुछ हमने विजुअल्स देखे हुए हों तो हम बेहतर डिसीजन ले लेते हैं इन चीज़ों का. So let's talk about the 10 Ramazan decoration ideas. So starting with number 10, we have Eid balloons. So have you seen the Ramzan balloons and Eid balloons? They have just started trending from last year or something, and they're really nice. जैसे हम देखते थे डेट्स के होते हैं balloons या फिर न्यू ईयर के balloons होते हैं, तो we have like Ramzan मुबारक वाले balloons. So you can order them from AliExpress. I hope Daraz has them too this time, or you can check online pages. I'm sure they are pretty easily available. और इनकी अच्छी बात ये होती है कि they stay, मतलब अगर आपका 30 days का है तो 15 days 20 days they will stay. तो इनकी मतलब ऐसे हवा वगैरह नहीं निकलती, and they look really nice, and you can have somewhere in the area where आप जब enter हो घर के तो आपको नज़र आए, और this is just creating the ambience of Ramzan. So this is a very good thing to do. So number 9 is Ramzan home decoration with frames. So you can add wall art in your rooms, जो कि आपके पहले भी अगर हैं, I promote frames a lot if you see my other videos. So having wall art जिसमें आपके prints होते हैं, जिनमें quotations होती हैं, जिसमें something वेरी रिलेटेबल लिखा होता है. कुछ लोग थोड़ी सी उसमें पर्सनलाइज कोट्स वगैरह लिख के प्रिंट करवा के just frame them, or you can get them from anywhere. So the thing is, you get it for Ramzan specifically, to the kind of duas you like or the kind of inspirational things you like for Ramzan. Just start your day with Bismillah, or things like that जो आपके लिए personally एक motivation होते हैं. 8th is Ramzan light decoration. So adding lights in any room or any area just enhances it, and the kind of LED lights we have available now, it's like gem. अब इतनी variety है, अब इतनी अच्छी lights आ गई हैं कि जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, they're not just कि बाहर ही मिलेंगी या फिर they're hard to find. They're so easy to find now. A friend of mine decorated her living room with these lights, and they look extraordinary beautiful, talking about the stars or moon वाली. तो they enhance your experience, और आपको ये जहाँ भी आप ये डिम, क्योंकि इनकी लाइट इतनी स्टार्क नहीं होती, इतनी आपको बॉदर नहीं करती क्योंकि बहुत ब्राइट हो, और आप मतलब आफ्टर इफ्तारी चलाएं या फिर सहरी में भी चलाएं, तो इट लुक्स रियली रियली नाइस, और बहुत आपकी स्पेस के एमएस को एनहांस करती है. तो नंबर 7 इज क्रिएटिंग रमज़ान कैलेंडर. सो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, स्पेशली इफ यू हैव किड्स. तो आप यू कैन जस्ट मेक अ कस्टम रमज़ान कैलेंडर. आई वुड रिकमेंड इट टू मेक इट बिफोर रमज़ान, क्योंकि सहरी इफ्तारी एंड योर डे टू डे एक्टिविटीज़ उसके बीच में करना, मे बी इट सूट्स यू. आई वुड रिकमेंड गेटिंग इट मेड बिफोर इट, तो ताकि आपको एक बच्चे के भी और आपके भी दिमाग में काउंट डाउन स्टार्ट हो. सो यू आर वेल प्लान्ड. इवन आपका कोई भी काम होता है, इट्स बिजनेस और पर्सनल, यू डू प्लान इट, यू प्लान योर हॉलीडेज. सो लाइक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो इसको अच्छे से प्लान करना. यू डोंट मिस आउट द डेज विच आर इम्पॉर्टेंट, यू डोंट मिस आउट द दुआज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो हैविंग दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ अ कैलेंडर, इट्स वेरी आई थिंक ये बहुत अच्छी अप्रोच भी होगी, और ये बहुत फ़ायदेमंद अप्रोच भी होगी. So yeah, next is Ramzan banner. So I really like these banners when they are done for kids room or your living room maybe. So these can be made by yourself, or you can order them. They are available for order, so you can just order them and just place it in your living room or your kids room, or the kind of banners there are. तो आपकी अपनी भी aesthetics कोई match करें और आपके room से भी करें, so it doesn't look odd like that. तो ये brown की जगह ना, they have started bringing in the colors which are very suitable for every space. So next is DIY Ramzan decor. So
if you have kids, I have a kid inside me, like I'm a child myself when it comes to doing DIY stuff and doing to cutting or ये सब. This is like my hobby. So even if you're like me, so you can have some inspirations and you can just cut and craft and create stuff which is like easy to make, and it means something to you, and it depicts something which is important for you. Lanterns are mostly more associated with the moon and the stars. They are more associated with Ramzan, so you can start with that, and they're pretty easy to do with some easy materials. So yeah, that will be a good way to go. Next is lantern decoration. So lanterns are my personal favorite because they're traditional and as well as contemporary. But for Ramzan, I'd recommend getting something traditional and having a light inside it. I would like a candle, which is the battery operated candle. That looks really nice if you just put the battery operated candle in different sizes of lanterns. Get a set. I'll recommend कि आप एक set लें, 3 हो 2 हो, मतलब बड़ा छोटा छोटा, ये बड़ा अच्छा लगता है. तो दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन शालमी. दिस इज़ इफ़ यू वांट टू गो प्रैक्टिकली, लेकिन ना जाएं, कोरोना है. नेक्स्ट इज़ अफ्तार टेबल डेकोरेशन. तो 30 days अफ्तारी तो होनी है, और हमारा मैक्सिमम अटेंशन और टाइम और वेट भी उसी टेबल के लिए होता है. सो गिविंग इम्पोर्टेंस टू इट एंड हाउ वी आर एंडिंग अ रोज़ा. सो इट मैटर्स बिकॉज आप सारे इकट्ठे हो रहे होते हो, आप सारी फैमिली बैठ रहे हो, तो आप के लिए वो टेबल किस तरह से डेकोरेटेड है, दैट डज मैटर. तो यू कैन गेट रियली नाइस टेबल रनर्स, यू कैन गेट LED lights or lanterns for this place as well, you can get candles for this as well, you can even get candles which are scented for this place. तो आपने अपनी इफ्तार टेबल डेकोरेशन पे ख़ास ध्यान देना है because this is something important. Next is countdown for Eid. Kids especially really enjoy this. Something is going to happen, और उनके माइंड में बातें इम्प्रिंट हो जाती हैं for whenever they are growing, और जिस भी एज में वो पहुँचते हैं, they remember कि हम छोटे होते थे तो ऐसे होता था. So considering having the countdown for this and getting things which do remind you that 30 days remaining, or up to like 7 days remaining, 6 days remaining, 5 days remaining. So it's a really nice, exciting thing to do for kids as well. Ramzan ornaments, and this is really nice if you have these kind of accessories in the house for with a change थोड़ा सा आ जाता है, जो आपकी एक regular, contemporary और maybe traditional सी accessories हैं, उनमें थोड़ा सा change आ जाएगा having these kind of accessories for Ramzan. So yeah, that's it for 10 simple Ramzan decoration ideas. Hope these help you renovate your home in that way and decorate it in this way. Do subscribe to my channel because I do post videos every week about interiors and home design. And thank you so much. Have a great day. Bye bye.